Hello friends, this is Ravi Verma from KCMT College. In continuation of our KCMT e-tutorial classes, आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग ऑडिटिंग का टॉपिक लेके आया हूँ that is called internal audit. As the name suggests, it's an audit which is conducted internally to improve and update the operations of the enterprise. Now going in detail, firstly, what is internal auditing? Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. Its scope involves organization's governance, risk management, and management controls, and provides the reliability of financial and management reporting and compliance with laws and regulations. It may also involve conducting proactive fraud audits to identify potentially fraudulent acts, participating in fraud investigations under the direction of fraud investigation professionals, and conducting post-investigation fraud audits to identify control breakdowns and establish financial loss. As these lines are concerned, we can summarize internal auditing as a measurement to evaluate the ongoing operations of the enterprise so as to enhance its effectiveness and efficiency. इंटरनल ऑडिटिंग रिकॉर्ड कीपिंग के दौरान किया जाना वाला ऑडिटिंग का वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम रिकॉर्ड्स के प्रिपरेशन के समय से ही हर चीज़ों को इवेलुएट कर लेते हैं कि वो मैनेजमेंट के द्वारा लागू किए गए पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट? These are to suggest improvements to the functioning of the entity, to strengthen the overall governance mechanism of entity, to establish standards and provide guidance on the documentation requirement, to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding compliance with the provisions of those laws and regulations, to perform specified audit procedure to help identify instances of non-compliance, to respond appropriately to non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations identified during the internal audit. डे टू डे रूटीन में होने वाले रिकॉर्ड कीपिंग को एट द प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग चेक करना, क्रॉस चेक करते रहना और उसके इम्प्लीमेंटेशंस की एश्योरेंस को ऑब्टेन करना, that is being the main objective of internal audit. Next comes what are the responsibilities for the person known as internal auditor. Internal audit is an independent management function which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements and add value for the overall governance mechanism. Unlike the statutory audit function, in which the auditor is responsible for identification of non-compliance with the laws and regulations with a view to obtain reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatements, whether caused by fraud or error, the responsibilities of an internal auditor are much wider. फाइनेंशियल ऑडिटर जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है तब उसमें गलतियों को ढूंढता है, उसके बारे में बताता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर डेली रूटीन में चलने वाले एक्टिविटीज़ को चेक करते हुए और मैनेजमेंट का एक इंडिपेंडेंट पर्सन होने के नाते
किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली कमियों को समय दर समय चेक करते रहता है और इंटीमेट करते रहता है। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट प्लानिंग। जब हम इंटरनल ऑडिट प्लान की बात करते हैं तो इट कवर्स द फॉलोइंग एरियाज। पहला, ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, obtaining the knowledge of the entity's accounting and internal control system and policies, determining the effectiveness of the internal control procedures adopted by the entity, determining the nature, timing and extent of procedures to be performed, identifying the activities warranting special focus based on the materiality and criticality of such activities, identifying and allocating staff to the different activities to be undertaken, setting the time budget for each of the activities, identifying the reporting responsibilities. So once we go for the scope, it incorporates the overall functioning of the enterprise so as to provide accurate data, accurate records for the managerial implementations. Next comes what are its advantages. But obvious, understanding and assessing the risk and evaluate the adequacies of the prevalent internal controls, identifying areas for systems improvement and strengthening controls, ensuring optimum utilization of the resources of the entity, ensuring proper and timely identification of liabilities, safeguarding the assets of the entity, reviewing and ensuring adequacy of information system, security and control, reviewing and ensuring adequacy, relevance, reliability and timeliness of management information system, ensuring compliance with internal and external guidelines and policies of the entity, as well as the applicable statutory and regulatory requirements. So once we try to sum up about internal auditing, यदि हम इंटरनल ऑडिटिंग को ब्रीफ करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटिंग के माध्यम से हम जो भी वर्तमान में चल रहा कंट्रोल सिस्टम है, जो भी हमारे इंटरनल चेक्स हैं, जो भी हमारे रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग है, जो भी हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिक्योरिटीज़ एंड कंट्रोल्स हैं, इन सभी का एश्योरेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं कि जिसके माध्यम से हमारा मैनेजरियल इम्प्लीमेंटेशन सही हो सके। अंत में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, क्या इसके उद्देश्य होते हैं और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, इन सभी चीज़ों को, इन सभी पहलुओं को आप समझ पाए हैं। धन्यवाद।